Dada Sham, everyone. It is my honor to welcome you today on behalf of the Sadhu Vaswani Center of Washington, D.C. in the U.S. We're joined today by more than 60 centers of Sadhu Vaswani all over the world, as well as over 160 other organizations that are here to honor our beloved Gurudev on his 144th birth anniversary. Sadhu Vaswani, if we try to sum up such a great divine life in a few words, it'll be difficult to capture the impact that he's had on hundreds of thousands of lives. But luckily, he made it easy for us. On one occasion, someone asked him, what is the essence of spirituality? What is the essence of the scriptures in just 3 words? And Sadhu Vaswani said, if I had to summarize all of the scriptures in just 3 words, my first word would be love. My second word would be love. My third word would be love. Those words encapsulate everything that we need to know about the life of our beloved Sadhu T.L. Vaswani, our Gurudev, our master. And, you know, there are those who practice what they preach, and truly Sadhu Vaswani lived by the doctrine of love. Whether it was a prince or a prisoner, whether it's people with, our 2-legged creatures or 4-legged creatures, the rich or the poor, men or women, young or old, everyone had a place in Baradada's large heart. And his generosity, his kindness, his compassion flowed to all without exception. His was a heart with no walls. We're even told by beloved Dada J.P. Vaswani that on one occasion when they were taking a walk, Sadhu Vaswani's heart broke at the thought of a stone being kicked to the side of the road. Even stones, even those creatures which we think have no life in them, according to Sadhu Vaswani, that one life, that one spirit flowed through all of them. And so we celebrate him, his birth, his life, with this one ideal, with this one message of compassion, of love. We are called to celebrate his birthday as a meatless day. For so many years, we've been honoring this day for decades now by saying no to food of violence, because what he saw in those creatures, those mute creatures, those voiceless creatures, was the face of God. And for this one day, we are called to do the same thing, to see what it would be like to be a little bit more human by accepting our brothers in the animal kingdom as equal to us, as worthy of our reverence, as worthy of our compassion. So let us honor this meatless day together in the form of one beautiful satsang that has been arranged by the Sadhu Vaswani Center of Washington, D.C. We'll start, as we always do, with an invocation to the Guru, with a few verses from the Bhagavad Gita, the 12th chapter, with a few words from the Nuri Granth, the writings of our beloved master himself, and Aarti, bhajans in the iconic voice of SEEMA RAMCHANDANI. So without further ado, I'd like to hand it over to Ganeshji to get us started. Dada Sham. Dada Sham. Om Gurur Brahma Gurur Vishnu Gurur Devo Maheshwara Guru Sakshat Parabrahma Tasmai Shri Guruve Namaha Tasmai Shri Guruve Namaha. Dada Sham. श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 12 श्लोक 13। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 12 श्लोक 13। वेर भाव खां जो रहे थो परे ऐं सभिनी जो मित्र अभिमान ममता बिना खिम्यावान
दयालु रहे जो सदा संतोषी, ऐं सुख में ऐं दुख में आहे जो समान, यतन में रतन जो रहे थो पके निश्चवारो, मन बुद्धि मुँह में जो अर्पण करे, सोई भक्त में जो प्यारो, सोई भक्त में जो प्यारो। दिजे की न कहीं खान कहीं खेज जारे, ऐं चिंता खुशी का न्यारो, हसद नाहि जंहिंखे न की क्रोध को, सोई भक्त में जो प्यारो, सोई भक्त में जो प्यारो। इच्छा रहित जो पवित्र चतुर जो, ऐं चिंता बिना जो करे थो सुधारो, फल जी इच्छा सब पिछी जो करे, सोई भक्त में जो प्यारो, सोई भक्त में जो प्यारो। बिना हर्ष ऐं द्वेष त्यागे थो जो भलो ऐं बुरो, चिंता रहित जो न उमेदूं अरे, सोई भक्त में जो प्यारो, सोई भक्त में जो प्यारो। शत्रु मित्र ऐं मान अपमान, थधि गर्मी ऐं सुख दुख सभिनि में समाभाव रखे थो, रहे राज़ी सब ते, निंदा स्तुतिअ में साॻीअ रीत हले थो, धन ज़र मिल्कत बिना ऐं शांति को अस्थिर चित्त वारो, सब्र में रहे जो सोई भक्त में जो प्यारो, सब्र में रहे जो सोई भक्त में जो प्यारो। अमृत रूपी ज्ञान अमल में जो आने सची अश्रद्धा वारो, वछे शरण में जी सोई भक्त में जो प्यारो, सोई भक्त में जो प्यारो। अमृत रूपी ज्ञान अमल में जो आने सची अश्रद्धा वारो, वछे शरण में जी सोई भक्त में जो प्यारो, सोई भक्त में जो प्यारो। ओम तत्सत। ये श्रीमद् भगवत गीता उपनिषद ब्रह्म विद्या योग शास्त्र जो श्री कृष्ण संवाद जो भक्ति योग वारो 12 अध्याय पूरो थियो। दादा श्याम अॼु ॾाढो शुभ ॾींहुं आहे। मां सभिनी भाउरनि भेनरुनि खे असांजे गुरुदेव जे जनम ॾींहं जूं लख लख करोड़ वाधायूं था ॾियूं। थैंक यू दादा, थैंक यू गुरुदेव। अॼु जो वचन श्री नूरी ग्रंथ साहिब मां सुफ़ो 14 पेज 14। असां दादा पधारिया आहिनि त उन ते वचन आहे, प्यारा पधारिया। मूं घर संत प्यारा पधारिया, कुर्ब जा कोल अची तिन पारिया। संत जना ने मुंहिंजी जीअ जिया पो, महर मिलियो मूं तिन जो न्यापो। नाम लख माया चोले इंसानी में, आया खणी से रहम रुआनी। चरण कमल में मुखे विहारी, महर नजर से मुखे निहारी।
मेहनत ना दी मोरी जिंदगी दृष्टि दया जी आहे बंदगी रतन संतन चरणन दिल का फूल मेहर नजर शल कन से कबूल चरणत ना दे आया बुआरी संतन सन्मुख निहारा दियारी प्यासी आहे नूरी निमाणी संत जना के डरते विकारी प्यासी आहे नूरी निमाणी संत जना के डरते विकारी दादा श्याम दादा श्याम थैंक यू Thank you, Uncle, for sharing with us the beautiful words of our Gurudev. And now we will continue the satsang with the Aarti. जय दादा जय हो जय दादा जय हो जय दादा जय हो जय दादा जय हो चरण कमल में सिर निभाऊं उठत बैठत महिमा गाऊं चरण कमल में सिर निभाऊं उठत बैठत महिमा गाऊं तू शिव शक्ति तू घनश्याम तू ही है दिल दिल का धाम तू शिव शक्ति तू घनश्याम तू ही है दिल दिल का धाम जय दादा जय हो जय दादा जय हो जय दादा जय हो जय दादा जय हो तू ही पिता तू मेरी माता तू भगवंत आनंद दाता तू ही पिता तू मेरी माता तू भगवंत आनंद दाता सत्य स्वरूप तू मेरे स्वामी तू सर्वज्ञ अंतर्यामी सत्य स्वरूप तू मेरे स्वामी तू सर्वज्ञ अंतर्यामी जय दादा जय हो जय दादा जय हो जय दादा जय हो जय दादा जय हो ज्ञान और ध्यान तू मेरी युक्ति तेरे चरणों में मेरी मुक्ति ज्ञान और ध्यान तू मेरी युक्ति तेरे चरणों में मेरी मुक्ति तेरे दर पर मांगे धूल दासी अंजलि कीजे कबूल तेरे दर पर मांगे धूल दासी अंजलि कीजे कबूल जय दादा जय हो जय दादा जय हो जय दादा जय हो
हो जय दादा जय हो जय दादा जय हो जय दादा जय हो। किन्ना दिता है तू रब्बा कि वे जिक्र करावे हर दम हर वेले, हर दम हर वेले तेरा शुक्र करावे। शुक्र करा मेरे दाता तेरा शुक्र करा, शुक्र करा मेरे दाता तेरा शुक्र करा, शुक्र करा मेरे दाता तेरा शुक्र करा, शुक्र करा मेरे दाता तेरा शुक्र करा। हाँ शुक्र करा मेरे दाता तेरा शुक्र करा, शुक्र करा मेरे दाता तेरा शुक्र करा। दिन रात में तेरा शुक्र करा, हर पल में तेरा शुक्र करा, दिन रात में तेरा शुक्र करा, हर पल में तेरा शुक्र करा। जद होवे हनेरा शुक्र करा, जद होवे सवेरा शुक्र करा, सुख दुख सब तेरा शुक्र करा, कुछ भी नहीं मेरा शुक्र करा। कण कण विच तेरा शुक्र करा, जिस राहे बसेरा। हाँ शुक्र करा मेरे दाता तेरा शुक्र करा, शुक्र करा मेरे दाता तेरा शुक्र करा। दरबार बुलाया शुक्र करा, चरवाना दिलाया शुक्र करा। दरबार बुलाया शुक्र करा, चरनाना दिलाया शुक्र करा। ईशान बुलाया सानू अपना बनाया, देशान बुलाया शुक्र करा, सानू अपना बनाया। अहंकार मिटाया शुक्र करा, धीरज उपजाया शुक्र करा। यकीन जताया शुक्र करा, भव पार लगाया। शुक्र करा मेरे दाता तेरा शुक्र करा, शुक्र करा मेरे दाता तेरा शुक्र करा। संगता के कारज आप खलोया, संगता के कारज आप खलोया। हर कम करावण, हर कम करावण आया राम। संगता के कारज आप खलोया, संगता के कारज आप खलोया। हर कम करावण, हर कम करावण आया राम। संगता के कारज आप खलोया, संगता के कारज आप खलोया। दुनिया दा वाली शुक्र करा, दुनिया दा वाली तेरी शान निराली शुक्र करा, तेरी शान निराली शुक्र करा। मैं तेरा सवाली छोड़े ना खाली,
मैं तेरा सवाली, शुक्र करा छोड़े ना खाली, शुक्र करा इन दे खुशहाली, डूबते को संभाले, देखे जो कमाए रखदा तू सवा की, शुक्र करा मेरे दाता तेरा शुक्र करा, 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 हाँ शुक्र करा मेरे दाता तेरा शुक्र करा, शुक्र करा मेरे दाता तेरा शुक्र करा, ओ तेरा शुक्र करा, ओ तेरा शुक्र करा, ओ तेरा शुक्र करा। It's a celebration. मौज अचे चढ़े मुरली अचे, मौज अचे चढ़े मुरली अचे, मुरली अचे चढ़े शाम अचे, शाम अचे राधा मुश्के, शाम अचे राधा मुश्के, राधा मुश्की त चंद चिमके, राधा मुश्की त चंद चिमके, मौज अचे चढ़े मुरली अचे, मौज अचे चढ़े मुरली अचे, मुरली अचे चढ़े शाम अचे, मुरली अचे चढ़े शाम अचे, शाम अचे राधा मुश्के, शाम अचे राधा मुश्के, राधा मुश्की त चंद चिमके, राधा मुश्की त चंद चिमके, मौज अचे चढ़े मुरली अचे। चंद चिमके, चंद चिमके जद सुरत करे शब्द मेरे वास, चंद चिमके, चंद चिमके जद सुरत करे शब्द मेरे वास, सुरत करे निवास शब्द में, जड़े दिल में उठे प्यास, सुरत करे निवास शब्द में, जड़े दिल में उठे प्यास, प्यास उठे वैराग अचे, प्यास उठे वैराग अचे, वैराग अचे चढ़े मुरली बजे, मुरली बजे चढ़े शाम अचे, मुरली बजे चढ़े शाम अचे, शाम अचे राधा मुश्के, शाम अचे राधा मुश्के, राधा मुश्की त चंद चिमके, राधा मुश्की त चंद चिमके, मौज अचे चढ़े मुरली अचे, मौज अचे चढ़े दाता अचे। प्यासू थे जड़ शाम पुकारे, विहारे पहंजे पास, प्यासू थे जड़ शाम पुकारे, विहारे पहंजे पास, शाम पुकारे पास विहारे चढ़े, विकार तिन्नास, शाम पुकारे पास विहारे जड़े, विकार तिन्नास, विकार वनन जड़े कृपा अचे, विकार वनन जड़े कृपा अचे, कृपा अचे चढ़े मौज मचे, मौज मचे चढ़े शाम अचे, शाम अचे राधा मुश्के, शाम अचे राधा मुश्के,
राधा मुश्कित चंद चिमके, राधा मुश्कित चंद चिमके, मौज अचे चढ़े मुरली अचे, मौज अचे चढ़े दादा अचे। आपो मिटे जड़े संतन जी, कृपा मिले। आपो मिटे जड़े दादाजी, कृपा मिले। कृपा मिले अंजलि तो तुझो, वक्त बुलंद खुले। कृपा मिले अंजलि तो तुझो, वक्त बुलंद खुले। वक्त खुले त मौज अचे, वक्त खुले त मौज अचे, मौज अचे जड़े मुरली अचे, मुरली अचे जड़े शाम अचे, शाम अचे राधा मुश्के, शाम अचे राधा मुश्के, शाम अचे राधा मुश्के। राधा मुश्कित चंद चिमके, राधा मुश्कित चंद चिमके, मौज अचे जड़े मुरली अचे, मुरली अचे जड़े शाम अचे, शाम अचे राधा मुश्के, शाम अचे राधा मुश्के। राधा मुश्कित चंद चिमके, राधा मुश्कित चंद चिमके, मौज अचे जड़े मुरली अचे, मौज अचे जड़े मुरली अचे, मौज अचे जड़े दादा अचे, मौज अचे जड़े दादा अचे, मौज अचे जड़े मुरली अचे, मौज अचे जड़े दादा अचे। Thank you. Thank you so much, Seema, for ushering in the festivity with your beautiful angelic voice. And as you just called upon Lord Krishna to join us in these festivities with that beautiful song, we will be joined by our beloved Didi in just a few moments. But first, I'd like to turn it over to Uncle Ashok Lalwani from the New Jersey Centers to say a few words. Uncle, welcome. संतन जो आहे ही परवानो, हलंदो असां सां बस एक खजानो, इश्क अजीबन वास्ते, इश्क अजीबन वास्ते। All the saints have but one message. What we will take with us is this one treasure, love for the beauteous one, love for the beauteous one. These are Sadhu Vaswani's words, but they could have been spoken by beloved Dada, by Pujya Swami Chidanand Saraswati ji, by SADHVI ji, or by our dear Didi. This one life that Sadhu Vaswani spoke of manifests itself in all men, birds, animals, things animate and inanimate. We are all part of the one whole, said beloved Dadaji to us. Today we are gathered here to celebrate Sadhu Vaswani's birthday and International Meatless Day. Amongst the several cities and states that have observed it around the world is our city in US, Atlanta. The Atlanta City Council and Dr. Gloria Tinubu, the council member, have made Atlanta a meatless city today in the USA. It's such a proud day for all of us and over the years, many, many, many more international cities and states will join us. It is Sadhu Vaswani's mission, it is his vision, and it will come true. Because Dada said, there can be no peace on earth until all killing stops. All of us can join in this mission of the Master to usher in that world
of peace. To join, each of us we have the Sadhu Vaswani Center for World Peace. If you just go on your cell phone, click on Instagram, and on Instagram, search for Sadhu Vaswani Center. And when you find it, just click on follow. Once you follow it, share it with all your friends and relatives and everyone you know. And as this message of the Sadhu Vaswani mission, of Sadhu Vaswani, of Dada, of Didi spreads across the world, it will release the energies to bring that peace that all masters have spoken about. Shanti. I think we're having some technical difficulties on Uncle's end, but the message was clear. That world of peace and love and compassion starts with us. We originally got that message over 100 years ago from our Gurudev Sadhu Vaswani and then beloved Dada. Today, that message comes to us in the musical, melodious voice of our beloved Didi, dearest Didi Krishna Kumari, who Uncle just spoke of a few moments ago as well. She is that messenger for us today. So let us hear her words and be inspired to do our part to build this world of peace and compassion that Gurudev Sadhu Vaswani envisioned. Didi, please enlighten us. दादा श्याम, प्यारी संगत, असांजा प्यारा गुरुदेव दादा जशन असांखे वरी वरी चवंदा हुआ त संतन जा जन्मदिन उहो उन जे मल्हाइण में तमामु वॾी आसीस आहे। उन्हनि ॾींहंनि ते फ़रिश्ता वर्खा वसाईंदा आहिनि ऐं अॼु अव्हीं असांजे गुरुदेव जो बर्थडे मल्हाए रहिया आहियो ऐं ईअं मां सम्झां पई ॼण त असां सभिनि ते हिन वक़्तु फ़रिश्ता पंहिंजे आसीस जी वर्खा वसाए रहिया आहिनि। अचो त असीं उन भाव में अची इहा आसीस असीं छपियूं। असांजा गुरुदेव साधू वासवानी रावल देस जा राणा हुआ, पर हुआ सद 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 निमाणा। हिकु दफ़ो उन्हनि वटि हिकु डेप्यूटेशन अचे थी, अ डेप्यूटेशन ऑफ मैन। क़ौम जा बुज़ुर्ग इंसान गुरुदेव साधू वासवानी वटि अचनि था ऐं साधू वासवानी खे छा था चवनि था, असीं तव्हां वटि हिकु नंढड़ी वेनती खणी आया आहियूं। तव्हीं न रुगो सिंधी क़ौम जा रूहानी रहबर आहियो, न रुगो भारत देश जा, पर सॼे विश्व जा रूहानी रहबर आहियो। असीं चाहियूं था त तव्हीं पंहिंजी ऑटोबायोग्राफी लिखो। तव्हांजी जीवन कहानी मां असांखे केतिरो ई सिखण जो मौक़ो मिलंदो। तव्हांजे स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसिस मां असीं केतिरो कुझु पिराए सघंदासीं। प्यारा दादा नियारीनि था ऐं पोइ मुश्कनि था ऐं खेनि छा था चवनि, मां त कुझु कीन आहियां, फ़क़ति हिकु ख़सीस ख़ादिम। सॼी कृपा सॼी शक्ति आहे उन मालिक जी। ऐं प्यारा दादा छा वधीक छा था चवनि त मुंहिंजे जीवन जी हिकु ई ख़्वाहिश आहे, ओनली वन एस्पिरेशन ऑफ दिस हार्ट, मे आई लिव अ हिडन लाइफ इन द हिडन गॉड। इहा हुई असांजे गुरुदेव साधू वासवानी जी गुजारत। हू हमेशह कुझु कीन मिसकीन बिल्कुलु दीन थियणु चाहींदा हुआ। बेशक हुननि पंहिंजी ऑटोबायोग्राफी कीन लिखी, पर पंहिंजे जीवन जे अमली रूप द्वारा, पंहिंजे जीवन में उन्हनि आदर्शनि जी साखी द्वारा हुननि केतिरनि न दिलियुनि ते जादू लॻायो ऐं केतिरनि जे दिलियुनि में तब्दीली आंदी। गुरुदेव साधू वासवानी ज्ञानी हुआ, ब्रह्म ज्ञानी हुआ, शायर हुआ, कवि हुआ, लेखक हुआ, तपस्वी हुआ। ही वॉज अ पोएट, अ राइटर, एन एजुकेशनिस्ट, अ ह्यूमैनिटेरियन। पर संदन दिल हुई फ़क़ीरियाणी, संदन दिल में हुई न्योरत।
केतिरियूं संस्थाऊं, हर का कॉन्फ्रेंस, हर को फंक्शन थींदो हो त हैदराबाद सिंध में चाहींदा हुआ त गुरुदेव अची इन मौक़े ते असांखे पंहिंजी आसीस ॾियनि, पर गुरुदेव ही ऑलवेज़ लव्ड टू बी इन द बैकग्राउंड। सभु चाहींदा हुआ त असीं गुरुदेव सां पंहिंजो फ़ोटो कढायूं, पर गुरुदेव छा चवंदा हुआ? फ़ोटो कम खोटो। हू कॾहिं बि पंहिंजो फ़ोटो कढण की न ॾींदा हुआ। जेसि ताईं 1910 में वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन्स थिए थी ऐं उत गुरुदेव खे भारत जो प्रतिनिधि करे सॾायो वञे थो। वेल्ट कांग्रेस में शामिल थियण लाइ खेनि जर्मनी वञिणो पियो, जंहिंजे लाइ पासपोर्ट कढाइणो पियो। ऐं जीअं अव्हांखे ख़बर आहे त पासपोर्ट में त फ़ोटो ज़रूरी खपंदो आहे। उन मौक़े ते दादा पहिरियों फ़ोटो पंहिंजो कढण जी मोकल ॾिनी। पोइ वरी वापसि आया त पासपोर्ट लिकाए पन्ननि जे विच में असुल अहिड़ो सोघो लिकाए रखियाऊं जो केर बि ॻोल्हे न सघे त प्यारे दादा जो फ़ोटो किथे आहे। न को कंहिंखे ख़बर हुई त प्यारे दादा जो जनमदिन कहिड़े ॾींहं ते आहे। हिकु ॾींहुं असांजी भेण दादी सती, जंहिंजो इहो सौभाग्य हो जो गुरुदेव साधू वासवानी जी केॾी न सेवा कयईं, हिकु ॾींहुं उन वेठे प्यारे दादा जी कोठी साफ़ कई ऐं जीअं पना पे छंडियाई संदसि अख पे पासपोर्ट ॾियां ऐं पासपोर्ट खोलियाई त उन में गुरुदेव जो जन्मदिन जो ॾींहुं ॾिठाई 25 नवंबर 1879 ऐं संदसि ख़ुशीअ जी हद न रही। ऐं उन साल खां वठी केॾे न उत्साह ऐं उमंग सां सॼी संगत 25 नवंबर असांजे परम पूज्य गुरुदेव जो जन्मदिन करे मल्हाईंदी आहे। असांजा गुरुदेव प्यारा दादा जशन, उन्हनि जे त रग रग में, रत जे फुरे फुरे में, दिल जे हिक हिक धड़कण में गुरुदेव जो आलाप आहे। हू न रुगो जागृत अवस्था में पर हर हिक सुपने में हू सिर्फ़ पंहिंजे गुरुदेव जो दर्शन कंदा हुआ। मां नंढी ॿार हुअसि पर मूंखे यादि आहे त असांजे गुरुदेव प्यारे दादा हिकु ॾींहुं असांखे हिकु तमामु सुंदर सुपिनो ॿुधायो ऐं मूं चयो त अॼु मां पंहिंजे भेनरुनि ऐं भाउरनि खे उहो सुपिनो ज़रूरु ॿुधाईंदसि। प्यारे दादा असांखे छा चयो? चयईं, मूंखे राति जो जेतोणीकि काफ़ी देरि थी वई हुई, मूंखे तमामु गहरी सुठी मिठी निंड अची वञे थी ऐं उन निंड में मां छा थो ॾिसां? मां ॾिसां थो त मां देवलोक में वञी पहुतो आहियां ऐं देवलोक में हिकु अजीब वायुमंडल आहे। तमामु ख़ुशी जी लहर जित कित फैलियल आहे। सभई पिया खिलनि, सभिनी जा मुख पिया टिरनि ऐं सभई रुधल लॻा पिया आहिनि, सभई मशगूल लॻा पिया आहिनि। मां सभिनि खां पुछां थो त छा में एॾो बिज़ी आहियो? सभु चवनि था अचे पियो, अचे पियो, अचे पियो। केर गुल पियो पुए, गुलनि जा हार पियो पुए, केर स्टेज पियो सिंगारे, केर गीतनि जी प्रैक्टिस पियो करे। हर हिकु कंहिं न कंहिं कम में रुधल आहे। ऐं असांजो प्यारो दादा वरी बि खाउन पुछे थो, तव्हां छा में रुधल आहियो? चवनि था अचे पियो, अचे पियो। प्यारो दादा खाउन पुछे थो, केर पियो अचे? चवनि था बोधि सत्व पियो अचे, बोधि सत्व पियो अचे। तॾहिं प्यारा दादा चवनि था कॾहिं ईंदो? चवनि था बसि तूं बि असां सां गॾु वे, असीं बि सभु उन जी हिकु इंतज़ारीअ में वेठा आहियूं। अञा ईअं मस चवनि था त ओचितो हिकु बिजलीअ जो चिमकाट थिए थो ऐं सॼे मंडप में, सॼे शामियाने में असुल रोशनीअ जो प्रकाश थी वञे थो ऐं सभिनी जे दिलियुनि मंझां हिकु ई आवाज़ु निकिरे थो, भली आया, भली आया। सॼो शामियानो इन आवाज़ सां गूंजजे थो ऐं प्यारो दादा चवे थो आहे केरु, आहे केरु? निहारे थो त हिकु रोशनीअ जो चिमकाट थिए थो ऐं ही रोशनीअ जो स्वरूप ॼण त हेठि लही अचे थो ऐं हिक हिक जे अॻियां वञे थो ऐं हिक हिक जे अॻियां वञी सिर झुकाए थो ऐं हिकु हिकु खेसि चवे थो, धरती माता तोखे सॾे पई, धरती माता वधीक ई बोझो झले नथी सघे, तूं हींअर हेठि वञ ऐं धरती माता जेको बोझ झले बीठी आहे उन ते बोझ आहे भारी, वञ तूं प्रेम अवतारी, वञ तूं प्रेम अवतारी। ऐं प्यारो दादा चवे थो ही केरु आहे बोधि सत्व?
जॾहिं हू बोधिसत्व प्यारे दादा जे नज़दीक अचे थो ऐं प्यारो दादा संदसि मुखरे ॾे निहारे थो त प्यारो दादा छा थो ॾिसे, ही त आहे असांजो दादल शाह, असांजो साधू वासवानी। ऐं हुन जूं अखियूं अची टिमकनि थियूं ऐं हू गुरुदेव जे चरणनि में किरी पवे थो ऐं गुरुदेव खे चवे थो, हलो त मां अव्हां सां पृथ्वी देस ते हलां जित सभु तव्हांजे लाइ वाझाए रहिया आहिनि। प्यारो दादा असांखे ही सुंदर सुपनो ॿुधाए थो ऐं सभिनी जे अखियुनि में कीअं न आब पियो वहे त कीअं गुरुदेव रावल देस जा राणा सभु तारनि जा तख़्त छॾे सभु सुख छॾे ही ॿई असांजे कारण हिन पृथ्वीअ ते पधारिया। पोइ मूं प्यारे दादा खे चयो, प्यारा दादा मां नंढी ॿार हुअसि, मूंखे हिकु ॿ ॿियूं आखाणियूं प्यारे दादा जे जीवन मां अॼु ज़रूरु ॿुधायो। ऐं प्यारो दादा चवे थो, प्यारे दादा जे माउ जो नालो हो वरान देवी ऐं संदसि पिता जो नालो हो लीलाराम। हिननि ॿिन्ही जे घर में असांजे गुरुदेव जो जनमु थिए थो। पर गुरुदेव ॼाओ त अठरो ॼाओ, मां नंढी ॿार, मां चवां थी अठरो छा थींदो आहे। तॾहिं प्यारा दादा मूंखे चवनि था त हर हिकु ॿार पंहिंजे माता जे गर्भ में 9 महीना ऐं 9 ॾींहं रहंदो आहे। अठरो ॿार रुगो 8 महीना पंहिंजे माता जे गर्भ में रहंदो आहे। मां वरी प्यारे दादा खां पुछां थी, आई वॉज अ क्यूरियस चाइल्ड, त प्यारे दादा गुरुदेव खां पुछां थी ईअं छो? तॾहिं प्यारे दादा मूंखे कहिड़ो जवाबु ॾिनो, चयईं असांजो गुरुदेव साधू वासवानी तरसी कीन न सघियो, चयईं मुंहिंजा भक्त मूंखे पुकारीनि पिया, मां वधीक कीन तरसंदुसि, मां जल्द वेंदुसि, उन्हनि जी पुकार उनाए मां जल्द वेंदुसि। हींअर बि प्यारो दादा असां मां हिकु जी पुकार पियो उनाए, रुगो असांखे सची दिलि सां पुकारिनो आहे। ऐं तव्हीं हर हिकु पंहिंजे जीवन में अजीब आज़मूदा ॾिसंदा। हिकु दफ़ो आज़माए ॾिसो, जॾहिं बि पाण खे कंहिं तकलीफ़ में ॾिसो, जॾहिं बि पाण खे कंहिं न कंहिं कष्ट में ॾिसो, सिर्फ़ु अखियूं पूरे गुरुदेव जो अमी ध्यानु कयो, पर सच्चीअ दिलि सां खेसि सॾियो ऐं ही रावल देस जो राणो अव्हांजी रूबरू अची बीहंदो ऐं हर पल, हर टिप ते, हर क़दम ते अव्हांजी सहायता कंदो। पोइ प्यारो दादा वधीक छा थो ॿुधाए, चवे थो, फॉर साधू वासवानी टू लिव वॉज टू सर्व, टू लिव वॉज टू गिव, टू लिव वॉज टू शेयर हिज ऑल विथ ऑल। चवे थो जॾहिं गुरुदेव नंढा ॿार हुआ, नंढे हूंदे खां वठी हिकु निराला ॿार हुआ, हू पंहिंजे लाइ त कुझु कीन चाहींदा हुआ। हुननि जे जीवन जो मोटो हो, यू फर्स्ट आई लास्ट। मुंहिंजे जीवन जो मोटो ऐं शायदि असां मां किन ॿियनि जे बि जीवन जो मोटो इहो आहे, आई फर्स्ट अदर्स लास्ट। पर असांजे गुरुदेव असांजे अॻियां हिकु ई आदर्श रखियो त तव्हीं पंहिंजे जीवन में सिर्फ़ु ई हिकु साधन कयो, अदर्स फर्स्ट आई लास्ट। प्यारी संगत, इहो हो असांजो गुरुदेव साधू वासवानी। फॉर हिम टू लिफ्ट द बर्डन ऑफ अदर्स वॉज हिज रिलीजन। He did not believe in decorated temples of silver and gold, but he said that the best worship that we can offer to God is the service we render to God through the service that we render to the poor and the broken ones, the birds and animals whom alas we slay. वरी वरी चवंदो हो त हिननि ग़रीबनि, हिननि दुखियनि में मूं प्यारे प्रभुअ जो रूप पसियो आहे। तव्हीं बि प्यारे प्रभुअ जो दर्शन करणु चाहियो त इन्हनि जी सेवा कयो। 25 नवंबर आहे असांजे गुरुदेव जे जन्म जो ॾींहुं। जेका बेस्ट ट्रिब्यूट, जेका बेस्ट गिफ्ट असीं खेनि ॾेई सघूं था, उहा आहे हीअ हिकिड़ी, त असीं पिरनि कयूं त असीं पंहिंजे गुरुदेव जो रूप हिकु हिकु में पसंदासीं, हिकु हिकु जी सेवा कंदासीं, हिकु हिकु अॻियां सिर झुकाईंदासीं, कंहिं में अवगुण कीन ॾिसंदासीं, हिकु हिकु में को न को गुण ॾिसण जी कोशिशि कंदासीं, हिकु हिकु खे पंहिंजे दिलि जो प्यारु ॾींदासीं, भल वॾो हुजे, भल नंढो हुजे, भल ग़रीब हुजे, भल शाहूकार हुजे,
ऐं ख़ासि करे हिननि गुगदामनि जी असीं सेवा कंदासीं, उन्हनि खे कुहाईंदासीं न, उन्हनि खे माराईंदासीं न, पर उन्हनि खे बचाईंदासीं। अचो अचो त असीं सभु पिरनि कयूं त असीं हिन हिंसा जे खाधे खां परे रहंदासीं। एंड वी विल मेक आवर एफर्ट त असांजे पारे में, असांजे फ्रेंड सर्कल में जेके बि आहिनि उन्हनि खां असीं हीअ हिकु पिरनि वठंदासीं दैट जस्ट फॉर वन डे, November 25, we will observe as a meatless day. The 25th of November is a day to remember. It is a meatless day. Dada Shah. Our deepest gratitude to you, beloved Didi, for sharing that message and for giving us that reminder of how blessed we are to have none other than a prema avatari, an incarnation of love, to guide us, to inspire us as our Gurudev, as our angel, Sadhu Vaswani. With that, I see Uncle Ashok, you are back with us on the screen. So if you have anything to share, no? Didi's message painted for us this picture of love incarnate, of service in action. She said that Sadhu Vaswani's message was giving, was serving, and he conveyed that message through his actions to further our celebrations of his name, of his legacy, of his teachings. I am honored to welcome someone in our midst to our satsang who also embodies these qualities in her life. SADHVI Bhagwati Saraswati from the Paramarth Niketan Ashram in Rishikesh, India. If we hear a little bit about her spiritual journey, her path, it quite resembles what we've seen in Sadhu Vaswani's life, beloved Dada's life, Didi's life. The idea of moving from the vaunted halls of academia, in her case, a PhD program at Stanford University, to the path of spirituality at the feet of her guru, Puja Swamiji Chidanand Saraswati. He inspired her to turn her back on this life of academia, of name and fame, and to give of herself in service to humanity. I could go on and on about the ways in which she's worked for the upliftment of Mother Earth to ensure access to clean water for those in need, the upliftment of the poor through education, empowerment, training, the message of peace in the halls of the United Nations. She serves in so many ways. She brings so many aspects of the messages that we learned from our Gurudev, our beloved Dada, into action through her daily deeds. And I can think of no one better to help us acknowledge the teachings that he's given us and to remember them and to bring them into action than Sadhvi ji. Sadhvi, I request you to join us and bless us with your words. Jai Gange. Jai Gange. Jai Gange Dada Sham. What a beautiful, beautiful blessing, opportunity to be with you all today, to listen to the beautiful words of my beloved and respected sister, Krishna ji, and to be surrounded by this community. I know that our revered Sadhu Vaswani ji, Dada Vaswani ji are not with us in their bodies anymore. But when this community comes together, their presence is here. I feel Dadaji. I did not have the blessing to have the darshan of Sadhu Vaswani ji in his body, but I had the blessing to be with Dadaji so many times. And that energy, that feeling, that blessing, I feel when I am together with all of you. So it's a beautiful blessing for me to be with you all. And
especially on this day for two reasons that are interlinked and interwoven. First of all, because it falls right at the time of Thanksgiving in America. And I just, not 5 minutes before I got on this with you, was on a program for Thanksgiving, leading a retreat, a special spiritual retreat for Thanksgiving. And we were speaking about the power of gratitude, and yet this irony of how in America gratitude is celebrated through murder, that we actually kill animals in order to express our gratitude, and how completely backwards that is. I remember when I was growing up, we used to go to New York to my grandparents' house for Thanksgiving. I grew up in Los Angeles, as Lavina gave the beautiful introduction. But my mom's family was from New York, and so we would always go for Thanksgiving. And at the Thanksgiving table of all of the extended family together, my grandfather would always make us go around the table and say what we were thankful for, what we were grateful for. And he passed away when I was a late teenager. So I had all of these experiences with him when I was 10, 11, 12, 13, 14, sort of those years of my life. And we'd sit at the table, and there was this huge turkey in the middle of the table, just staring at you. I mean, it was dead, of course. It had been baked and stuffed and whatnot, but it was still the full turkey. And I wasn't raised a vegetarian, but I had become a vegetarian just viscerally, automatically realizing that animals are not food, not meant to be eaten. And I remember sitting at that Thanksgiving dinner year after year, trying to think of something appropriate to say when it came my turn. But year after year, much to my grandfather's great anger and dismay, the only thing I could ever say when it and he would get very angry every year. And every year I would think, okay, I'll be better this year. But the tragedy and the tragic irony of somehow harming God's creation at all, but especially in the theoretical service of giving thanks, just struck me as so deeply wrong on every level, even from a child. So being together now at this time of Thanksgiving, which aside from the tragic ironies of the presence of the turkey, is actually a beautiful holiday to remember to give thanks and to have gratitude and to live in gratitude. And when I think of gratitude, I think of Dadaji. I mean, he lived in such a state. It didn't matter what he had in that moment. His experience was of such abundance and fullness that all he wanted to do was give and share. I remember being with him and Puja Swamiji together in South Africa at the Parliament of Religions back in 1999. And we spent a day at an ashram there where they were feeding poor people and homeless people. And one of them did not have a shirt. And I watched Puja Dadaji literally take off his own shirt and give it to this man. Not from a position of I'm the one who has and you don't, or look at how great I am, nothing. I mean, you all knew Dadaji, you don't need me to tell you how he was. But just in the expression of such extraordinary love and gratitude
Gratitude for the opportunity to serve. And that's what he taught us. Is not we serve just because we are the ones who have and we are somehow separate from those who don't. But we serve because we are one with them. There is no separation. There is no distinction. There is no other. We serve because our cup runneth over so much that we give the way that flowers give fragrance. We give the way that apple trees give apples, because it is our nature. That's what Dadaji taught. It's what he lived. It's what he exemplified. It's what he embodied. But it's also what he taught. It was just how to give, how to give. So I love being able to be with you all at this time of Thanksgiving and to bathe together in that Ganga of Dada as we remember his life, but also his teachings. And gratitude was one of the core teachings of his life. And that, of course, wove together with the kindness that he lived with, the compassion, the giving. And as we celebrate Meatless Day today, this is just one of the passion projects, you can say, that Dadaji had. And it stems from that compassion, from that love, from that kindness, from that spiritual awareness that we are not separate. That teaching in the Upanishads that says so beautifully, Isha vasyamidam sarvam, yat kincha jagatyam jagat, tena tyaktena bunjita, magrada kasya svidana. That everything in the universe is pervaded by the divine. There is nothing that is not pervaded by the divine. Therefore, be very careful. Do not think that anything belongs to you, because everything is God's and everything is God. And that is how Dadaji lived. That everything, everyone was God's, belonged to God, and that everyone and everything was God and was divine. As we celebrate Meatless Day today, I want to just take a couple of moments for my younger sisters and brothers who are listening, because being a vegetarian in a culture that is like America or Europe or England or all over the world, sometimes we get asked a lot of questions, and sometimes we get criticized, now not nearly as much as many, many decades ago when I was given the name vegetarist by my friends, because I was so adamant about it that they called me a vegetarist. I was a teenage vegetarist, they said. And now it's easier, I know, but it's not still very easy. And a lot of people want to know, why are you vegetarians? And people ask all kinds of questions about, well, you know, God made cows, and so shouldn't we eat them? And isn't it cruel to eat carrots and apples also? And, you know, all sorts of questions that people ask. And so I wanted just to take a couple of moments, since this is also one of my big passion topics and projects, and to just give you some tools to put in a toolbox so that when you get asked why you are vegetarian, you have answers. The core answer is whatever matters to you in the world, whether you care about animals or not. If you care about human beings, particularly children who are hungry, starving in third world countries, being a vegetarian is the only answer. It takes 16 times as much grain
to make meat as to make vegetarian food. So for example, if I have 16 pounds of grain, wheat, rice, corn, soy, I can either feed those 16 pounds of grain to a cow or a chicken or a pig. And eventually at the end of the day, once they've digested and pooped and lived and eaten more and digested and pooped and lived more, once when they die, or we kill them, I get 1 pound of meat for those 16 pounds of grain I put in. But if I took those 16 pounds of grain and I made bread or rice or pasta, I actually would end up with 16 pounds of bread or rice or pasta. Meaning that every time you choose meat over non-vegetarian or over vegetarian options, you're literally saying, I deserve the food of 15 other people. Let them starve. I'm going to use 16 people's worth of grain for my meal of meat. Tens of thousands of children die every day of starvation. Every day. And yet, the United States alone produces enough grain that we could give every person on earth 2 loaves of bread a day. We could feed 10 billion people a year. There's only 8 billion on the planet. With the grain that is grown only in America. There is absolutely no reason for tens of thousands of children to die of starvation. 1 billion people go to sleep hungry. So if you care about world hunger, or you care about children, you become a vegetarian. If you care about the environment, the meat industry, the beef industry, is the single greatest deforester of our rainforest. It's not oil, it's not wood, it's not other development, it's cattle grazing. The beef industry, the beef producers, are clear cutting the Amazon rainforest at 1 acre a second. Imagine. With every clap, a second of rainforest is gone just to graze cows to make beef. The Amazon is the lungs of the world. It gives us 20% of the oxygen, 20% of the water, and it absorbs 20% of the planet's carbon emissions. And we're cutting it down to graze cattle. The United Nations produced a document called Livestock's Long Shadow that said that the animal agriculture, the meat industry, was the single greatest contributor to climate change. So even if you don't care about animals, and even if you don't care about people, if you care about trees, if you care about climate, if you care about Mother Earth, you become a vegetarian. Lastly, so much more to share, but time is short. Lastly, we are on the brink of a global water crisis. The United Nations says that by 2040, the world will have only half the drinking water that it needs. India is on track to be there by 2030. There are going to be up to hundreds of millions of water refugees, people who have to leave their homes simply because they don't have access to clean water. And yet, the amount of water that goes into the production of 1 meal of beef, you sit down for hamburgers with your friends, the amount of water that goes into that meal is the same amount of water. It's about 2,500 gallons, approximately 10,000 liters. And it's the same amount of water that you use in bathing every single day for 6 months, which means that if you care about water,
you would have to not bathe for 6 months in order to offset the water usage of that one meal of hamburgers. With chicken, it's about a third. So you would just have to not bathe for 2 months. So anything you care about, the answer is go vegetarian. But I want to just leave you with one last point. As I know that our Puja Dadaji, Puja Sadhu Vaswani ji, they were embodiments of compassion, but they also were very practical. Very practical. They were not stuck in something from hundreds and hundreds or thousands of years ago. They were modern in their own times, in their own ways, very practical. And we are now at a time where we need to be not just vegetarian, but we need to be vegan. And that was not necessarily true in India when Sadhu Vaswani ji and Dada Vaswani ji were living there. It's very much true in most of India today, and it is definitely true in America, in England, in Europe, in most of the world. The dairy industry is an industry of horrendous violence. And the dairy industry is linked directly to the meat industry, because when the dairy cows give birth, their babies do not become dairy cows, even if they're girls. All of their babies, the girls and the boys, from the cows on dairy farms, immediately get shipped off to either become veal, if they're going to be killed when they're babies, or to grow and become beef. So by buying milk, we are directly, literally putting dollars, euros, pounds in the pockets of the meat industry. But even aside from that, if you see how these cows are treated, how they are kept pregnant, how they are impregnated, it's rape, it's violence. If you see videos, and there's so many on YouTube, of actually what the workers in these dairy farms do to impregnate these cows, what their lives are like, it's incredible violence. So we're now at a point where I feel that if they were alive today, and especially if they were alive in the West, just as vehemently as they argued for vegetarianism, they would argue for veganism. So my prayer to you all, as we honor and celebrate Sadhu Vaswani ji and Dada Vaswani ji, that we hear their call today in the world that we live in, which is a world in which we need to give up the milk. And there's so many other alternatives now to get all of your calcium and nutrients and all of those things. So in celebration and honor of our oneness with the animal kingdom, and in celebration and honor of compassion and love and nonviolence and giving and sharing that they taught us, let us all go not only vegetarian, which I assume we all are, but let us go vegan, and let us share that with all of our friends and all of our communities, for the earth, for our sisters and brothers on the earth, and of course for the animals. And I am so grateful to all of you for this beautiful opportunity to be together on this day, and to once again have a sacred bath in the river, the Ganga, of Dada Vaswani ji and Sadhu Vaswani ji. Our gratitude to you, Sadhvi ji, for enlightening us and for empowering us with these practical, tangible reasons for heeding the call of our inspiration, our master, Sadhu Vaswani.
We're so grateful. Thank you for joining us today. We Thank continue this sorry, Uncle, if you'd like to add on. No, thank you, Sadhvi. I'm very much honored and thankful to you. Just bless us. Keep blessing us. Thank you. We continue this celebration of Gurudev Sadhu Vaswani's ideals and words in the angelic voice of our friend SEEMA RAMCHANDANI. And I hope that Sadhviji will stick around to watch the video in the end that that Uncle Bhagwan has produced in favor of a meatless diet. Today's Meatless Day song. Uncle Bhagwan, do we have the video with the English subtitles? Yeah. Oh, perfect. So if you are around, and otherwise we can send it to you. We'd love you I to. already sent. Simaji, I have great. already. Okay, great. So then we can go back to Dada's bhajans, and then we can do a little teaser of the song that we're going to show you later. Simaji, I suggest first you give 2 lines of what we have made, and then he can play the video. Thank you. You mean later or now? You want me to sing 2 lines of the song? At the time of when he's playing video. Okay, bhali. Ik tolai, tolai, tolai. 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 Ik tolai ukir mein मीठी गीत गाया. एक तोलाई ukir mein मीठी गीत गाया. एक तोलाई, 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 तोलाई अंजू बेटी हारा. अच्छी रात तोलाई, तोलाई, तोलाई पियड़ा महाबारा. एक तोलाई, तोलाई, तोलाई. एक तोलाई, तोलाई, तोलाई. एक तोलाई, तोलाई, तोलाई वाटून ते वाजाया. अच्छी अजी बीठस नदिया जे किनारे. विधि तो पुकार्या लहरुन दे निहारे. विधि तो पुकार्या लहरुन दे निहारे. ओ अची अजबी खस नदिया जे किनारे. अची अजबी खस नदिया जे किनारे. विधि तो पुकार्या लहरुन दे निहारे. 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 एक तोलाई, तोलाई, तोलाई. एक तोलाई, तोलाई, तोलाई. एक तोलाई, तोलाई, तोलाई वाटून ते वाजाया. क्यों तेज लगन पे आज हित हवाऊं. क्यों तेज लगन पे आज हित हवाऊं. तू बिन सजना न प्यो कोई चाहूं. तू बिन सजना न प्यो कोई चाहूं.
एक तोलाय 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 एक तोलाय 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 एक तोलाय 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 वाटून तेव्हा छाया दिसन डिंगायूं छडजे कीन छोरी दिसन डिंगायूं छडजे कीन छोरी कदमन का भूलज तू संजरी समूरी कदमन का भूलज तू अंजरी समूरी एक तोलाय 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 एक तोलाय 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 एक तोलाय 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 वाटून तेव्हा छाया एक तोलाय उकीर में मीठी गीत गाया एक तोलाय उकीर में मीठी गीत गाया एक तोलाय 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 हंजू बेठी हार्या ओ अची रात तोलाय 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 दियड़ा मां बार्या एक तोलाय 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 एक तोलाय 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 एक तोलाय 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 वाटून तेव्हा छाया I'm guessing I still have time, or are we moving to the video? I think we were slotted for... Go ahead, Uncle. The video, no? I think as Bhagwan Uncle mentioned earlier, we'll hear from you, right, Seema, a few lines from the song that's been prepared for the video, and then we will see this beautiful presentation on the message of the day. I thought he mentioned we'll do that before the video of the animal rights song. Or are we doing it now? Uncle Bhagwan, direction, please. Whatever you like. I have no problem. I'm ready. If you want to do it now, I'm Right, ready. right. Do it now. Oh, okay, now. Okay. Confusion. दिल कहता है दिल की सुनो 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 तन से तो इंसान हो लेकिन मन से भी इंसान बनो तन से भी इंसान बनो दिल कहता है दिल की सुनो दिल की सुनो दिल कहता है दिल की सुनो दिल कहता है दिल की सुनो दिल कहता है क्यों हर जीव को खा लेने की बेचैनी है दिल कहता है जीव की इच्छा को तरजीह भी क्यों देनी है वो तो मूक है दे ही देगा जा अपनी चुपचाप मगर
दिल कहता है स्वार्थ की खातिर जान किसी की क्यों लेनी है। सबके दर्द को अपना समझो तब खुद को इंसान कहो। दिल कहता है दिल की सुनो। Over to the message now, and you'll watch the whole video later. Thank you. Thank you. Thank you, Seema. 25th of November is a day to remember. It is Meatless Day. Please do observe 25th of November. हम शाकाहारी बन के भगवत स्वरूप पूज्य साधु वासवानी जी को सच्ची श्रद्धांजलि दें, यही मैं आप सबको प्रार्थना करता हूँ। To stop killing any form of life is wonderful. It is really necessary. 25th November is a day to remember. It's a meatless day. Millions of the people world over are celebrating this day as Meatless Day, as a tribute to the great saint Sadhu Vaswani ji. We love our children, so do animals. Let us stop all killing. I would appeal to you kindly to observe the 25th of November, Sadhu Vaswani's birthday, as a meatless day. दिल कहता है दिल की सुनो, दिल कहता है दिल की सुनो, दिल कहता है दिल की सुनो। दिल कहता है दिल की सुनो, दिल कहता है दिल की सुनो, दिल कहता है दिल की सुनो। तन से तो इंसान हो लेकिन मन से भी इंसान बनो, मन से भी इंसान बनो। दिल कहता है दिल की सुनो। दिल कहता है क्यों हर जीव को खा लेने की बेचैनी है। दिल कहता है जीव की इच्छा को तरजीह भी क्यों देनी है। वो तो मुख है दे ही देगा जा अपनी चुपचाप, मगर दिल कहता है स्वाद की खातिर जान किसी की क्यों लेनी है। सबके दर्द को अपना समझो तब खुद को इंसान कहो। दिल कहता है दिल की सुनो। दिल कहता है दिल तो उनके पास भी है जो धड़कता है। दिल कहता है मन तो उनके पास भी है जो मचलता है। जैसे चोट के लगने पर हम दर्द से भर के तड़पते हैं, दिल कहता है बिल्कुल वैसे ही हर जीव तड़पता है। भोजन है या शव है किसी का, सोच समझ कर थाल चुनो। दिल कहता है दिल की सुनो। दिल कहता है प्रेम से भर लो उनको अपनी बाहों में। दिल कहता है प्रेम तलाशो उनकी निश्चल आंखों में। जिनके होने से दुनिया इतनी सुंदर लगती है, दिल कहता है खुशी न ढूंढो उन जीवों की आहों में। प्रेम अहिंसा की एक सुंदर चाल
को बेदाग बुनो, दिल कहता है दिल की सुनो। तन से तो इंसान हो लेकिन मन से भी इंसान बनो, मन से भी इंसान बनो। दिल कहता है दिल की सुनो, दिल कहता है दिल की सुनो। Thank you so much, Seema. Thank you, Bhagwan Uncle, and everyone who was behind the creation of that beautiful audiovisual reminder of Sadhu Vaswani's message. With that, we will transition into the Master's voice itself and hear his message directly from him. Seema, if you could help us invoke his blessings with Hare Krishna, Hare Ram, and we'll hear from Gurudev. Hare Krishna, Hare Ram, Dada Shyam. 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 Oh, Dada Shyam, 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 Dada Shyam. Hare Krishna, Hare Ram, Dada Shyam, Dada Shyam. Hare Krishna, Hare Ram, Dada Shyam, Dada Shyam. Hare Krishna, Hare Ram, 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 Dada Shyam. प्यारे सत्संगियों, भेनरों ऐं भाउरों, रोज़ बरोज़ हित असीं गीता जे अध्याय मां के श्लोक ॿुधूं था। हींअर बि असां ॿुधा के श्लोक। पोइ हिकु श्लोक में ॾिसो, श्री कृष्ण सिख्या ॾे थो दया जी, मित्र थियो। श्री कृष्ण चवे थो मित्र थियो, मित्र जो मित्रवान आहे, वैर भाव खां जो परे, जंहिंखे मित्रता आहे, जंहिंखे दया आहे, सभिनि भूतनि वास्ते, सभिनि प्राणियुनि वास्ते, सोई भक्त मूंखे प्यारो। श्री कृष्ण चवे थो, सोई भक्त मूंखे प्यारो, सोई मूंखे भक्त प्यारो। अॼु जेकर हिननि थोरनि मिंटनि जो हिकु नंढिड़ो वीचार मां दिलि जे अंदरि खणी वञा, अभी ॿियो वीचार खणी वञो। मां सम्झां थो त केतिरे वक़्त खां असां मित्रता जो भाव विञायो आहे। असीं जानवरनि सां मित्रता में नथा हलूं। असांजे दिलनि अंदरि जेकर भई नओं मित्रता जो भाव अचे ऐं असीं सम्झूं
त ही पशु ही पक्षी मित्र आहिनि। हिकु वक़्तु गान जे वास्ते केॾी न श्रद्धा हुई, हिन वक़्तु इहो भाव बि झको थींदो वियो आहे। जेकर वरी असीं वीचार करियूं जानवरनि जो ऐं पखियुनि जो, वीचार करियूं ऐं दिलि जे अंदरि हीअ इरादो करियूं त असीं हिननि जा दोस्त थी रहंदासीं, मित्र थी रहंदासीं। छो त जो मित्र आहे सभिनि प्राणियुनि जो, सोई श्री कृष्ण चवे थो आहे मुंहिंजो भक्त प्यारो, मुंहिंजो भक्त प्यारो। जानवरनि वास्ते मां सम्झां थो हिन वक़्तु जेकर नओं भाव खुले, न फ़क़ति प्यार ऐं मोहबत पर नई श्रद्धा जानवरनि जे वास्ते। के मुंहिंजा वीचार हिन संबंध में अमांखे नवां लॻनि, मांखे शायदि ये वीचार क़बूल न कनि, पर मुंहिंजो इहो वीचार अथव त हिकु हिकु जानवर में आत्मा आहे। ऐं संत गौतम इहा सिख्या ॾिनी, या श्री कृष्ण सिख्या ॾिनी। संत गौतम चयो पंहिंजनि शिष्यनि खे हिकु हिकु जानवर उन में उहा शक्ति अथव या मूं में आहे। अञा ताईं केतिरा भक्त अथव गौतम बुद्ध जा, केतिरा भक्त चवंदा आहिनि त हिकु हिकु जानवर हिकु ॾींहुं बुद्ध थींदो, हिकु हिकु जानवर पाण खे अहिड़ी हालत में हिकु ॾींहुं आणींदो जो हुन में बुद्ध जी शक्ति प्रकाश थींदी। हिकु हिकु जानवर बुद्ध थींदो, हिकु हिकु पखी, हिकु हिकु पशु असां खां निरालो कोन्हे। जीअं हिकु हिकु इंसान ऋषि थियणो आहे, हिकु हिकु इंसान ब्रह्मज्ञानी थियणो आहे, हिकु हिकु इंसान, हिकु हिकु मनुष्य कृष्ण जो रूप थियणो आहे। तीअं हिकु हिकु जानवर, हिकु हिकु पशु, हिकु हिकु पखी हिकु सभागे ॾींहुं कृष्ण जी तस्वीर, बुद्ध जी तस्वीर थींदो। इहा दया छा आहे? मुंहिंजो वक़्तु गुज़री वियो आहे। दया जा 10 रूप आहिनि, 10 रूप दया जा, जिन जो ज़िक्र शास्त्रनि में थियल आहे। दया जा 10 रूप से कहरा, तिन जो ज़िक्र जेकॾहिं अहिड़ो को मौक़ो वरी मिलियो अवां जे अॻियां रखंदुसि। 10 रूप, तिन मां हिकु रूप ही अथव जानवरनि खे प्यार ॾियो, मांस खाइण खां परे रहो। ॿियो रूप ग़रीबनि दुखियनि खे प्यार ॾियो, उन्हनि जी शेवा कयो। जिन खे अझो न आहे तिन खे अझे वठी ॾियण में मदद करियो। जिन खे खाधो न आहे तिन खे खाधे ॾियण में मदद करियो। जिन खे कपिड़ो न आहे तिन खे कपिड़े वठी ॾियण में मदद करियो। ॿिया बि केतिरा ई रूप आहिनि। 10 रूप, मुख्य रूप दया जा 10 रूप। पर जेकॾहिं हिन महीने में असीं दया जे 2 रूप चित में रखूं, जानवरनि जी आसीस पायूं, ग़रीबनि दुखियनि जी आसीस पायूं, पशुनि ऐं पखियुनि जी शेवा करियूं ऐं ग़रीबनि दरिद्रनि जी शेवा करियूं। शद ईअं थिए, शद ईअं थिए, शद मां सभिनि जे दिलनि अंदरि बि नओं प्यार अचे, नई मोहबत, नओं उत्साह, नओं दर्शन इन्हनि पशुनि पखियुनि वास्ते। ते पशु पखी असां खां जुदा कोन्हनि,
पर आसान शहरा आसान शहरा ऐं जहाँ शक्ति असांजे अंदरि आहे आत्मशक्ति सां इन्हनि जे अंदरि बि आहे ईश्वर इन भाव में असीं वठूं हिननि जी शेवा करे पंहिंजो मानिक जन्म सफल करियूं सफल ओम ब्रह्म कृपा केवल कृष्ण कृपा केवलम गुरु कृपा ही केवलम ओम शांति शांति Thank you, Dada, for painting this beautiful portrait of a world of universal friendship, universal kinship, in which we can behold our Lord seated in the hearts of everyone. Please bless us that we may make that vision a reality with your grace. Thank you, Dada. Thank you, beloved Gurudev. Thank you, Didi, for blessing us with your words of wisdom and keeping us connected to our Guru's message. Thank you, Sadhvi ji, for gracing us with your presence and reminding us how fortunate we are to call ourselves members of this family in Sadhu Vaswani's name. Thank you, SEEMA, for gracing us with your melodious voice and treating us with the words of the Master in such angelic melodies. Thank you, Bhagwan Uncle, for including me in this beautiful celebration. I am so grateful to be part of Dada's global family, and occasions like these remind us how fortunate we are to have one another. I'll turn it over to you for any other closing remarks, Uncle, before we turn it over to Ganesh ji for Prabhu Teri Kripa se. असीं पहिरीं त सभिनी खे लख लख करोड़ वाधायूं हुजनि असांजे गुरुदेव जे जनमदिन जूं असीं ॾाढा भागनि वारा आहियूं जो असां सभिनी साधू वासवानी फैमिली सां गॾिया आहियूं ऐं हिकु जुड़ थी हिकु परिवार थी विया आहियूं जेके साधू वासवानी जा दादा जशन जा ऐं दीदीअ जा जेके बि अमोलक वचन आहिनि उहो ॿुधी करे उन ते हलण जी कोशिशि कयूं था पर उन जो मेन जेको आहे त अॼोको ॾींहुं त घटि में घटि मांस न वठायो मांस मच्छी खां परे रहो थी सघे त हमेशह लाइ करियो त उहो त ॾाढो सुठो थींदो असांखे गुरुदेव जी आसीस मिलंदी सभिनी खे आसीसूं मिलंदियूं त थी सघे त न खाओ त वधीक सुठो आहे वरी बि हिकु अर्ज़ु आहे त अॼोको ॾींहुं त असुलु न खाइजो प्लीज़ ऐं मां शुक्रगुज़ार आहियां असांजी दादा जशन जो असांजे गुरुदेव जो असांजी दीदीअ जो ऐं असांजी साधवी भटी प्लस यूएस लवीना सीमा रामचंदानी प्रदीप ऐं सॼी सारी संगत जा जेके अची करे असांजा ॿुधनि आसीसूं ॾियनि था ऐं सत्संग जो लाभ वठनि था मां स्पेशल थैंक्स थो चवां सभिनी सिंधियुनि ऐं मंदरनि खे जिन असांखे साथ ॾेई करे 100 खां मथे जेके आहिनि ग्रुप्स उन्हनि जॉइन कयो आहे मां उन्हनि जो ॾाढो आभारी आहियां ॾाढो शुक्रगुज़ार आहियां ऐं असांजे साधू वासवानी सेंटर्स में जिन जॉइन कयो आहे उन्हनि जो मां ॾाढो शुक्र थो मञां बसि सभई आसीस कंदा रहो दुआऊं कंदा रहो जीअं असांजा इहे सत्संग हलंदा रहनि ऐं इहे सभु हलंदा आहिनि तव्हांजे आसीसुनि दुआऊं ऐं तव्हांजे दर्शन ॾियण सां दादा शाह थैंक यू We'll sing together. प्रभु तेरी कृपा से सब काम हो रहा है प्रभु तेरी कृपा से सब काम हो रहा करते हो तुम प्रभु जी मेरा नाम हो रहा है प्रभु तेरी कृपा से सब काम हो रहा तकलीफ और तंगी में नित्य तू ही मददगार
उठाए हैं अंजलि के जन्मों के सारे बार, करता नहीं मैं कुछ भी, सब काम हो रहा है। करते हो तुम ओ दादा, मेरा नाम हो रहा है। करते हो तुम ओ दादा, मेरा नाम हो रहा है। दादा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, सब काम हो रहा है, सब काम हो रहा है। दादा श्याम, दादा श्याम, दादा श्याम। थैंक यू, थैंक यू।